Hello everyone, a very good morning to all present here. I am Dr. Dipti Patil and will be today's host for the event. On behalf of Mr. Chandrakant Salunkhe, founder and president, SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, I welcome you all to India SME Business Summit focused on finance, manufacturing, technology, exports. This event is a unique platform for entrepreneurs to connect and understand the various developments in banking, finance, manufacturing, export technology, government policies, international markets, IT and ICT, digital and industrial revolutions, and other aspects which are beneficial to all the manufacturing and SME sector. Friends, I would like to express gratitude to all the sponsors and supporters, namely Principal Partner, State Bank of India, Mumbai Metro Division. Special thanks to Mr. G.S. Rana, Chief General Manager, who is very dynamic and friendly towards industries, to support in order to avail various financial products and services for further business growth. Platinum Partner, Yes Bank, Gold Partner, Bank of India, Flexible Working Partner, Go-To Technologies India Private Limited. On behalf of the Chamber, we are thankful to all our supporters, MSME Development Institute, Ministry of MSME Government of India, Director General of Foreign Trade DGFT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Industries Department of Government of Maharashtra. We are also thankful for the organizations who have supported this event: SME Export Promotion Council, SME Industrial Parks of India, World SME Trade Center, Packaging Industry Association of India, SME Investment Promotion Council, Startups Council of India, Industrial Park Partners, Bhumi World. About the Chamber. Friends, I'm happy to inform you all that SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association have been working for the last 30 years of the business growth and expansion, as well as explore emerging business opportunities at the national and international markets, export promotion, supply to large corporates, MNCs, government PSUs, identifying the foreign partners for joint ventures, technology transfer, contract manufacturing, and international collaboration. The association and chamber are supporting manufacturing industries, exporters, service providers, all kind of manufacturing industrial units and business sectors for marketing, promotion, branding of products, distributorship, franchisee, channelizing finance and investment for business growth and expansion, assistance to avail of various incentive and advantages of various government departments, resolving various issues and grievances related to the manufacturing industries and other business. We have been providing networking platform for identifying business partners, investors, distributors, franchisee, service providers, capital good manufacturers, as well as extending value-added services and business advisory services for transforming the businesses and SME sector and emerging enterprise, as well as to enhance profitability and to improve capability for global competitiveness. Under the dynamic leadership of Mr. Chandrakant Salunkhe, founder and president, SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, resolving and taking up issues and grievances with the appropriate government authorities for resolution and as well as to provide level playing field. We are emphasizing to redress the issues related to labor, power, taxation, law and order, harassment by the local goons, labor union, MIDC, infrastructure, shipping, customs, logistics, transportation, warehousing and environment. Mr. Salunkhe has been regularly coordinating and advocating to secure the interest of the manufacturing industry and SMEs with the Chief Minister, Ministers, Secretaries of Government of Maharashtra and Union Government, senior police officials, diplomats, missions, heads of the regulatory authorities, senior executive of the financial institutions, Reserve Bank of India, corporates, multinational companies, customs and collectorate.
Mr. Saunke's mission is to support manufacturing industries and SMEs for better business growth and secure their interest by pursuing the government for providing level playing field to compete with the local and global market. To begin with today's conference, I invite all the dignitaries on the dais. Now I request the dignitaries to take their seat and would like Mr. Chandrakant Saunke to please accompany them. Shri Anil Kanse, Assistant Director General of Foreign Trade, DGFT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Shri S.B. Singh, General Manager, SME Department, Bank of India. Shri Amit Jain, Business Head, SME Banking, Yes Bank. Now I invite Mr. Chandrakant Saunke for introductory address as well as to highlight the activities and initiatives of the SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association. Thank you very much. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, it's my immense pleasure to welcome you all at this important program. First of all, I'm thankful to Mr. S.B. Singh ji to accepting our invitation and supporting this important event, particularly supporting to SME sector. Special thanks to Mr. Jain from the S Bank. Aye Rana sir, give a big hand to Mr. Rana, Chief General Manager of SBI Mumbai Metro. I welcome you, Rana sir. Mr. Kanse from the DGFT, friends from industry, Mr. Sen Gupta from EY Technology Division, Mr. Avinash Vella, who is handling our SME Technology Development Council, Mr. Verma, DGM of Mumbai Metro SBI, which is very helpful and giving guidance to SME sector to avail various support services from the SBI. Friends, today's conference is focusing particularly on the banking perspective, because any entrepreneur, any business, any enterprise is depend on 5 M's: money, market, manpower, we can say mentoring, and mindset. Because unless until you will not prepare your mindset to start a business and to accept the challenges to compete with local and international market, you can't grow. Most importantly, you're putting your own capital, putting your own investment, but you will not get additional funding from banks. You will not grow. I'm not saying that every company is utilizing the banking funding, but some entrepreneurs, particularly in the SME sector, they face a big problem to get a funding. During 1996, I was a member of advisory board of CGT SME. SIDBI has set up one group of entrepreneurs on heads of various organizations to understand the issues and problems of the SME sector. And Mr. Prakash Nimbalkar was heading the SIDBI as a chairman. And we had a meeting at Bhopal. And during that time, we have invited 10 entrepreneurs from the local market that they can share their experience. They can talk about their issues and problems. And that time they realized that they are not getting funding from bank because of the collateral. They don't have collateral. Then I have suggested Mr. Nimbalkar ji, why not we can think about to provide a collateral fee loan, particularly in the manufacturing industry. And that time, I think 1997, maybe year maybe I'm confused, but 1997, the 25 lakhs collateral fee loan started for particularly manufacturing industry. Now, all sectors are included, and up to 2 crore rupees you can take collateral fee loan. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ब्रांच में कहा जाता है कि पहले कोलैटरल दिखाओ और बाद में लोन लो, बट नाउ बैंक पर्सपेक्टिव मस्ट बी चेंज. और जैसे कि आपका प्रपोजल, हमारे इंडिया में इतने अच्छे कंसल्टेंट है, इतने अच्छे एडवाइजर्स है, बिजनेस एडवाइजर्स है, EY से लेके छोटे छोटे कंपनीज है जो एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं.
मुझे अगर लगता है कि समझो हमारे एंटरप्रेन्योर्स और इंटरप्राइज, इफ दे आर टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस, प्रिपेयरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो मुझे लगता है कि ना एस बैंक, ना SBI, ना बैंक ऑफ इंडिया विल से नो टू योर प्रपोजल। कहीं ऐसा हो सकता है? एलिजिबल एंटरप्रेन्योर को, वाइबल प्रोजेक्ट को क्यों न देंगे? Whenever I discuss with the Governor RBI, because I am the member of Monetary Policy Review Committee, every quarter मेरा पहला क्वेश्चन था कितने बैंकों ने हमारे SME को कितना पैसा दिया, कितने रिस्ट्रक्चर हो गए, कितने रिवाइव हो गए और कितने बंद हो गए। एक ही क्वेश्चन आता है कि आवर SMEs आज की डेट में अगर देखोगे, देयर आर एटलीस्ट 6.33 करोड़ SMEs इन इंडिया। ऐसे देखा जाए तो 12 करोड़ तक जा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर इंक्लूड करते हैं तो कहिए कि अगर समझो इसको हम सही मायने में देखा जाए, इफ वी कन्वर्ट दिस सिस्टमैटिक आइडिया इनटू रियलिटी, अगर SME सेक्टर को तरीके से बैंकिंग पर्सपेक्टिव से लेकर गवर्नमेंट के, जैसे अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, हम स्कीम इतनी बनाते हैं सरकार के पीछे लेके, PM ऑफिस के पीछे लेके, MSME मिनिस्ट्री के पीछे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पीछे, गुजरात गवर्नमेंट के पीछे, हर स्टेट गवर्नमेंट अच्छी स्कीम लाते हैं, बट अल्टीमेटली बहुत ऐसा पैसा जो स्कीम में लाता है, पॉलिसी में लाता है और रिटर्न चला जाता है। हम ऐसे प्रोग्राम का महत्व यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको कनेक्ट करना, एंड इन दैट कनेक्टिविटी से आपका कमर्शलाइजेशन करने की बहुत जरूरत है। तो फ्रेंड्स, स्पेशल थैंक्स टू SBI, S Bank, Bank of India for providing support to organize this today's event, and mainly, my interest is for SME perspective। आज की डेट में अगर इंटरनेशनल SME अगर देखोगे तो हमारा माइंडसेट उनसे बहुत सही है मायने पे। हम एटलीस्ट तो लगे रहते हैं। US, कनाडा, इवन चाइना में देखा मैंने, जापान में देखा, 2-3 साल बिजनेस किया, लगा उनको अच्छा नहीं लगता है, बंद कर दिया, नहीं तो किसी को बेच दिया, या किसी को, नहीं तो फिर वो इंसॉल्वेंसी में चले जाते, निकल जाते। बट हमारे इंडस्ट्री में, हमारे SMEs में एक अच्छा माइंडसेट है कि नहीं, कंटिन्यू, भले चैलेंजेस है उसको फेस करो, आगे बढ़ते चलो। तो फ्रेंड्स, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड थिंक अबाउट, पर्टिकुलरली इन अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव। जैसे अभी अजीत गुरु जी को मैंने पूछा था, क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस। इतने सालों का तजुर्बा लेकर मैंने एक ऐसा सोचा कि व्हाई नॉट वी कैन ब्रिंग आउट अ न्यू आइडियाज। हम बैंक के पास जाते हैं, हमारे बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अभी आजकल GST का फिगर, इतना ही देख के आप पैसा देते हो। हम राणा साबर में, हम लोग पालघर में थे, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि क्यों ना हम बैंक, एज अ बैंक, मतलब SBI हो या बैंक ऑफ इंडिया, एस बैंक, एंटरप्रेन्योर्स को बुला के उनको पूछे कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस का मायना क्या है। हाउ यू आर डीलिंग विद योर बायर्स, हाउ यू आर डीलिंग विद योर सप्लायर्स, हाउ यू आर इम्प्रूविंग योर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिट वर्दीनेस के साथ साथ क्रेडिबिलिटी हमारे SME सेक्टर की बढ़नी चाहिए। नहीं तो आज की डेट में SME के तरफ देखने का जरिया कैसे होता है? अगर आपको किसी को पता होगा, KC चक्रवर्ती थे जो पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन थे और बाद में डिप्टी गवर्नर RBI के बने थे। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी ब्रांच मैनेजर के सामने छोटा एंटरप्रेन्योर बैठता है तो उससे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। ये ही इज़ अ फ्यूचर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। बट आपके ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि टाटा, अंबानी, बिरला बनेंगे हमारे, लेकिन 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक तो जा सकते हैं अगर किसी में कैपेसिटी हो, किसी को अच्छा फंडिंग मिलता है, वो तो बढ़ सकते हैं। बट एक मैं बैंकर्स को कह सकता हूँ, हमारे में कोई विजय मल्ल्या और नीरव मोदी नहीं है। हमारे सब सही एंटरप्रेन्योर्स है जो सही मायने में पैसा देते, इंटरेस्ट पे करते हैं और बिजनेस चलाते हैं। उनको सर्वाइव होना है, उनको आगे बढ़ना है और इंडिया को आगे बढ़ाने के हिसाब से उनका काम है। तो फ्रेंड्स, आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट one thing we should clear that as an entrepreneur, because today's message is going to be all India level and we are going to send message to the government also. गवर्नमेंट के पास मशीनरी है, स्कीम है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो लेने वाले हमारे कम है। उन्होंने तो बताया कि इंसेंटिव स्कीम में बहुत सारे लैकिंग है, बट मैं जानता हूँ बहुत उससे ज़्यादा है। एक डिले भी होता है, वो डिले के लिए हमने कम किया है। रादर 2001 में
जब रंगनाथन जी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थे तो मैंने उनके पीछे लग के वन विंडो सिस्टम शुरू होना चाहिए करके बोला, बिकॉज एंटरप्रेन्योर शुड नॉट गो हियर एंड देयर। वन विंडो सिस्टम में उन्हें सब लाइसेंसेस मिलने चाहिए एक एप्लीकेशन देने के बाद। तो सभी सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाई थी उन्होंने, राणा साहब, उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि वन विंडो सिस्टम का मतलब ऐसे नहीं कि 10 विंडो पे घूम के आए फिर लास्ट में वन विंडो में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे वन विंडो मीन्स वन विंडो ही होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, अभी बैंक में देखिए ना, सेंटर पॉइंट है, आपको फाइल भेजनी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं देख रहा हूँ अभी इतना फास्ट काम चल रहा है, 15-15, 20-20 दिन, 8-8, 15-12 दिन में भी किसी किसी के प्रपोजल सैंक्शन होते हैं। कारण ये है प्रिपरेशन, सिस्टमैटिक योर प्रपोजल टू बी प्रिपेयर्ड। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी तो हम बैठे। सो क्रेडिबिलिटी के साथ साथ क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ने की बहुत जरूरी है हमारे एसएमई सेक्टर की। और मुझे लगता है कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको मैन पावर की ज़रूरत है, स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आपका असेसमेंट बहुत तगड़ा होता है। Sen Gupta ji, I think you can highlight few things, what is the lacking and hurdles for international cooperation along with the technology. This is the right time because banks देखिए आपको पैसा देने के लिए तैयार है, सब बैंकों के पास पैसा पड़ा है, बहुत पड़ा है। आपने पढ़ा होगा 2-3 दिन में कि अभी गवर्नमेंट से बैंक लेती नहीं पैसा, अभी नहीं मांग रही, बहुत पैसा उनके पास है। तो ये पैसा हमारे एसएमई सेक्टर को दीजिए। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में या 5 साल में डेफिनेटली हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, द टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये होने के लिए हमारे एसएमई सेक्टर ही काम कर सकता है। इसको अगर बढ़ावा देना है, एसएमई को एम्पावर करना है, तो बैंक शुड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विद दिस एक्सपेक्टेशन आई एम थैंकफुल टू एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एस बैंक फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेनली we want to have a more tie-up with the entrepreneurs, particularly those are looking for value addition services, advanced technology हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। और सबसे महत्वपूर्ण मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास भी एडिशनल इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस होगी तो आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडिया में आ रही है, एंड दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट नाउ एंड दे डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। 3 साल तक कौन देखता जाएगा? 3 साल में वो जो प्रोडक्ट लाएंगे उस प्रोडक्ट में तो कम से कम 100 गुना बढ़ोतरी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो इफ यू हैव एडिशनल लैंड, एडिशनल प्रीमाइसेस, और अगर आपको चाहते हो विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस, वी आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद इंडस्ट्रियल पार्क्स, सो वेयर यू कैन टेक एडवांटेज. So thank you very much for attending this conference, and let us take advantage and hope that today's deliberation will be useful for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite all the dignitaries to light the lamp and to inaugurate traditionally. I request Mr. Chandrakant Sarunkhe and all the dignitaries on the dais to come forward to light the lamp. Shri Anil Khan. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं. And I would also request Mr. Chandrakant Sarunkhe sir to felicitate all the dignitaries. Shri Anil Kanse, Assistant Director General of Foreign Trade, DGFT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. A big round of applause. Thank you, sir. Shri G.S. Rana, Chief General Manager, State Bank of India, Mumbai Metro Circle. Welcome, sir.
Shri S.B. Singh, General Manager, SME Department, Bank of India. Shri Amit Jain, Business Head, SME Banking, Yes Bank. Now, I would request Shri G.S. Rana, Chief General Manager, State Bank of India, Mumbai Metro Circle, to address us, and his topic is Role and Initiatives of State Bank of India for Empowering SMEs and Manufacturing Industries for Better Business Growth. Please, sir. Good morning, friends. Let me first express my sincere apology for, slightly late to the event. Yes, Mumbai traffic, and of course I came from down south in Mumbai. Salungeji, who is founder and president of SME Chamber of India, the senior executive from Yes Bank, from Bank of India and the Government of India and SME department, and the enterprising leaders who are actually, igniting the growth, industrial growth in India. MSME, I remember, when the Act was enacted in 2006, when the MSMED Act came into being. And before MSMED Act came into being, the general person among the bank, we used to have the nomenclature like the small scale industries, the small business finance, and we used to call them, in combined form as SIB business, the commercial and institutional businesses. But ever since this act was enacted, I think a lot of focus has come in this sector. And the figures, I'll give just 2-3 kind of figures which the contribution made by the MSME in the Indian economy. When it comes to GDP, nearly 30 to 1/3 of the Indian economy's GDP is contributed by MSME. So we can, understand, we can imagine the power of MSMEs. When it comes to exports, nearly 40 to 45% of the exports is given by the MSMEs. When it comes to employment generation, around 9 crore, 10 crore people are directly and indirectly engaged with the MSMEs. So unless the MSMEs keep growing, unless MSMEs flourish, I think not only in India, around the globe, no economy is going to flourish, no economy is going to grow. So that is why the kind of dream we have, the kind of target the government of India has set for the economy, that we should reach by 2027 the mark of $5 trillion economy. So that is only possible when the MSMEs, they start firing. We had, of course, yes, we just came out of the pandemic, 2 years have been a lull in the economy, but I think it was probably the support from the government of India. They came with the GECL, Government Guarantees Emergency Loan, and of course the contribution then in turn, banks made. So somehow the MSMEs, we are able to, pass through the pandemic. And the leadership of India, Honorable Prime Minister, I think the number of vaccinations, I think nobody would, ever imagine in the world that 2 billion plus of vaccination can happen within no time. And today probably, we are the safest country as far as, fighting the COVID is concerned. You see the bigger economies like the China, they are still struggling. You see Europe. So when, Europe, all the developed economies, they are struggling in terms of growth. You can see the inflation rising, 40 years high, 50 years high. Has we, ever thought of that Europe and US will have inflation of 8% plus? And the resilience, I think the Indian economy has shown, the regulators have shown the part to the banks. And today, I think even when we look at the inflation data, that is kind of under control in India. So MSMEs, they really play a big role when it comes to economy. And when it comes to banks, yes, if I take my bank's case, State Bank of India has been at the forefront of funding the SME units. I think we were the first bank who started the funding of SSI those days, early 70s. If I talk of some initiatives we have taken inside the bank, yes, we have at the apex level, at the corporate center level, we have a vertical which is headed by a deputy managing director level officers. So we can understand the amount of focus we have inside the bank. And
After the corporate center, at the local head office level, like, I'm heading a circle here, we have a DGM level officer, Mr. Verma is sitting, in front. He is the SME business head in the circle. So like we have 17 business heads in the circles who are driving the SME business. Yes, I know the perception among the general public, the enterprise leadership is, yes, when it comes to banks, particularly government bank and more so state bank, we are not that prompt. But believe me, yes, there will be issues when it comes to probably processing the files, but because we are seriously and sincerely trying to improve the TAT. In fact, inside, when our new chairman took over in 2020, the first question he asked the SME people was to bring down the number of pages in the proposal. How can SME proposal be running into 100 plus pages? So we have been seriously trying, and when the proposal runs into 100 plus pages, the officer who is preparing the proposal, the officer who is assessing the proposal, the officer who is sanctioning the proposal. So that is how TAT sometimes that gets elongated. But yes, we are seriously trying to bring down the number of pages so that we need lesser and lesser information from the customers. Then what we did in 2019, we have in a structure like below the local head office, we have the administrative office, or we call it module, or the zonal office. So zonal office, when the zone which is headed by a DGM, he has so many areas to maybe the business area, the operational area, the customer service, and all kind of A to Z of operations of that particular zone is overseen by the DGM. So in order to support the SME business and zone, we created different structure, separate structure, which is headed by an AGM, and who has been given the support of 2 people to drive only SME business. So the focus is of course there, but still, as Salunke says, it depends on your particular file. If your financials are good, banks will be after you. So it's basically a risk return kind of situation where the bank perceives there's hardly any risk. The enterprise, the customer will get best of the rate. So it's basically the formula, the structure we have inside, the circular instructions we have inside the bank, and of course all those instructions are driven by the guidance, the regulations given by the RBI. Second thing we did in around 2004-5, just before this MSMED Act came into being, we started centralized processing of loans. Of course, that is for the small ticket loans. So that is we call it SME centers or retail asset center processing center. That is only up to 50 lakh loans. But recently in Mumbai Metro Circle, we have started, that bank has started on pilot basis. We are now sourcing the loans from our branches based on the QR code. So any enterprise, any SME customers can walk into any of our branch, and there we have placed our QR code, and by inputting basic information about your enterprise, your application will be sourced digitally, and that application straight away goes to our the processing cell. Of course, that has recently started, but we have around 400 plus branches in the circle, and still I think around less than 200 branches, the branches are to be activated. But still the initial feeling was probably somebody who walks into the branch, he has a feeling probably that QR code is also for the loans other than the SME. So many people started scanning that code for the personal loans also. That is how it happened. But I think that will streamline, and that is how bank has started just on the pilot basis in Mumbai Metro Circle. So that is another, to bring down the number of papers, to bring down the number of issues for the general enterprise, we have started the QR based digital loans. Then we have dedicated relationship managers to take care of the SMEs. So dedicated relationship manager means he will have just 25 to 30 accounts. So he need not, have many accounts to look after. And again, then he has also been given a support of a dedicated officer. So an officer who is of, skill 3, skill 4 grade in the bank, we call them manager or chief manager. He is just looking after 25 to 30 SME units. So I think you can understand the amount of focus and the time I think that particular relationship manager should have with him, because of the support he has. One officer already has been given, and those relationship managers are posted only in SME intensive branches. Here in Mumbai Metro Circle, we have 19 SME intensive branches, and in the bank we have 800 plus SME intensive branches. Just to bring SME into focus, we have posted the people who are conversant with the SME business. So we have the branch head who would have definitely some SME experience, who will be heading that branches. So we have 19 SME intensive branches in Mumbai Metro Circle, and we have 55 relationship managers.
and on pan-India level we have around 2,000 relationship manager. So the focus is there on SME, and of course December 22 we clocked around 3 lakh crore, and we have a target of reaching 4 lakh, taking our SME loan book to 4 lakh crore by FY24. So internally we are doing a lot of soul searching, a lot of discussions how to support the MSMEs. Then of course I think many of you must be on personal banking front must be using our YONO, the app we call it is You Only Need One. So inside the YONO app, that's we have also a YONO business loan link inside the YONO lab. So probably I think the business enterprise, I sincerely request all of you, please go and use the our YONO business app also. There you have a lot of links to I think even the people who are into import and export business, we open our letter of credit online through that YONO business app. So many things are there, I think, and we are, as the from the top, from the government, there's a lot of push on the digital space. So we are also trying to bring in more of digital into even the SMEs, so that we somehow try to do away with as many paper as possible. We take lesser number of paper, lesser papers from the customer, from the business enterprise, so that the processing, sanction, and probably the disbursement happens more seamlessly. I think there are many other initiatives, but I won't take much of our time. And thank you, Salunke ji, once again for inviting us for this event. I think last 2 weeks back we had similar event in Tarapunya Shell Estate also. So you can see, even in the limited geography we have, at my administrative control. So we are trying to meet as many SME enterprise as many possible. I think next month we'll have similar kind of event somewhere in district Raigad also. So I have worked as DGM SME also earlier here, 2005-6 around 5-6 years back. So I have some feel of SME business in the Maharashtra and Mumbai metro area, and I try to relate my this position to the position when I was DGM SME in this circle. And I think many of the customers in Mumbai metro area, so my numbers are always available, and even that's available on our website also. But still, at the cost of, I think I can share with all of you my cards, and I am available 24/7, and I'll very happy to receive free and frank feedback from all of you, and we are really there to help you. So thank you, all the best. Thank you so much, Rana sir. Now there's one announcement from SBI. SBI presents industry's first QR code based business loan. For details, please contact the help desk outside. Next, I would like to call upon Shri S.B. Singh, General Manager, SME Department, Bank of India, and he is going to guide us on empowering SMEs and manufacturing industries for better business growth, role and initiatives of Bank of India. Over to you, sir. Good morning, friends. I am thankful to Salunke sir for giving this opportunity to Bank of India. My banker colleagues as well as the industry participants. MSME per se, what Rana Saab has very brilliantly told about the role of the MSME in the economy. Two things if you see. We have to reach $5 trillion economy. We are expecting to be the third largest economy by 2030. If these two things have to happen, they will come only from two segments, that is agriculture and MSME. These two sectors of the economy are the sectors where we can generate incremental income by minimum investment on per capita level. Secondly, what we are seeing, the abrupt growth across the cities or metro cities or the big cities, whatever you may call it, it is posing serious challenges for infrastructural development for the government. If we are focusing on MSME or agri-related businesses, we will have lower investment on those fronts. I don't say that investment is not required, the investment is required.
But in the interest of the economic growth, we can prioritize where to invest. And lastly, what we are saying or seeing, that there are some pockets of excellence or pockets of the centers where industries are flourishing. If we are not going to promote small scale industries, how we can talk of the decentralized growth? Our country, with this population as well as the geographic coverage across the states, we need decentralized development for overall economic development and improving the quality of life up to the bottom of the pyramid. These two segments have to play very significant role. From our perspective, what in-house as well as at various fora we are discussing is close to 10 to 11 crores of SME entrepreneurs. More than 92 or 93% of them are under micro segment, whose requirements are very, very minimal. Less than 50 lakhs. 1 crore is the maximum requirement. If we have to develop them, we cannot expect much as a capital contribution from them. If we are making them to displace from their original place of residence, they will have the establishment cost or the reallocation cost also. The person who is not in a position to provide capital as a margin for 10 lakhs or 20 lakhs of loan requirement, can we think of getting them migrated? So the very first challenge with us is to reach out to those sections through decentralization of power or the processing processes at that level. Out of 11 to 12 lakhs enterprises which are available in the segment, only 2.5 to 3 crores are getting credit for the formal sector. Majority of them, rather 75% of them, are getting from informal credit channels. So we can see the tremendous scope available there. It is an interest of each one of us if we can do that. What Bank of India has done on that front, no doubt our balance sheet is not as big as Rana Sahab was telling. We are aspiring to get 1 lakh MSME portfolio by 2024. He is already having 3, expecting to be 4 the next year. Whatever initiatives we have taken, we have tried to decentralize our processing centers. We have opened more than 100 processing centers across India. They are majority at all the district headquarters. We are trying further to decentralize them so that the travel time of the customer is very, very minimal. We have put on marketing force in those centers so that their applications can be sponsored in a better way. To make them more accessible towards banking services, we have digitally started processing all the loans up to 10 lakhs. They can visit any of our branches, they can fill in their application, and very shortly, I think by end of this month, we are going to provide them e-platform wherein they can fill their applications from their own comfort zones, either from their homes or from their shops. This initiative of Bank of India, we expect, is going to give big boost at least to micro enterprises. We are also going to set up separate digital lending department to take care of all those things. The major challenge, another what we are facing in MSME lending, is their income or the source, from where and what are their total sources of income. As one of my participant colleagues were saying that they were having initially 2 balance sheets. Still now, if you ask them, they will say, they will ask to their CA that what tax they can save. They are going to distort their balance sheets. So balance sheet cannot be the only measure to finance them. But yes,
with the introduction of account aggregators, we have got some other sources also. That is, what is GST return, what is their sales, or sharing their accounts with the banks, that what is the turnover in the account. If we are going through all those things, we can certainly go in for supply chain finance. Whatever the total supply they will making in a year, based on that we can provide them finances, and these sources are credible sources because their transactions are routed either through their account or through the tax system. So we are one of the pioneers in public sector banks on the TRADES platform, where we are doing the invoice discounting. We are also going in for full-fledged supply chain finance, either on the supplier side or on the buyer side. We will be doing that. And all these initiatives, what we are focusing on is to develop the mid segment among MSME. That is between 10 lakhs to 1 crore, which is the prime requirement of the country as of now. For bigger, Salunke Saab is there, his other counterparts are there, they have trade bodies, trade associations, they can go and raise their voices. But this is a segment where we don't have much of participation of the trade bodies also. Thirdly, these are based on the local resources also. If we have to optimize our local resources, or whatever our Prime Minister is saying, vocal for local, we have to move to the field and provide the facilities where the raw material or the manpower is available, that will further give boost to our traditional industries, handicrafts and all those things, which are in the state of revival at this juncture. So I think that's all from what Bank of India is trying to do for developing this sector. This sector is very promising from our perspective, and will continue to help out the sector in our mutual interest, whatever we can do for that. I once again thank SME Chamber for inviting me and giving Bank of India this opportunity. Thank you all very much. I wish the summit to be a great success. Thank you. Thank you so much, Shri Singh sir, for those wonderful inputs. Now, may I request Shri Anil Kanse, who is the Assistant Director General of Foreign Trade, DGFT, Minister of Commerce and Industry, Government of India, to enlighten us on role of DGFT for sustainable export growth, policy, schemes, incentives and benefits. Over to you, sir. डायस पे सभी मान्यवर एवं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं अनिल कंसे, असिस्टेंट डीजीएफटी, मैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मेरा जो रोल जो उन्होंने बताया है, जो मुझे लेक्चर देना, जो इंसेंटिव, मेरे पास कोई इंसेंटिव अभी है नहीं। आपने सबने देखा होगा अभी जो इंसेंटिव वगैरह पार्ट है वो सिर्फ एसएमईज का जो आपके या काउंसिल्स वगैरह वही आपको दे सकते हैं। हमें जो है, जो मेरी कुछ स्कीम्स है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो हमारा जो रोल है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जिसके अंदर 1 ट्रिलियन का हमारा एक्सपोर्ट करना है। मुझे सबसे पहला आपका एक जो विजुगुषु वृत्ति है उसका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसा सर ने बताया कि बाकी देशों में आपके एसएमई जो है 2-3 साल में दम तोड़ देते, पर आप फिर भी इतने तकलीफ़ों के बावजूद भी आप आज खड़े हैं और आपने आपका बिजनेस चालू रखा है। हम आपके पास आए हैं, ना मैं आपको कोई फाइनेंस दे दूँगा ना कुछ, जो मगर हमारी जो स्कीम्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने आया हूँ। इसका कारण ये है कि आप में से शायद सब लोग मैन्युफैक्चरर्स है, इसमें एक्सपोर्टर्स कितने हैं? अच्छा, तो एक अच्छे खासे एक्सपोर्टर्स भी, पर हम अभी चाहते हैं कि जैसा कि हमने देखा है कि हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट है उसके अंदर एसएमई का रोल लगभग 50% तक हमारा एक्सपोर्ट है, जो आप लोग उसमें करते हैं। पर अगर अगर दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो वहाँ लगभग 70% तक, 65 to 70% उनका रोल है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी आपका एक्सपोर्ट में आप एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें और एक्सपोर्ट करें। अभी आप तो ये कहेंगे, अरे भाई मेरा तो 141 करोड़ का मेरा पॉपुलेशन है, मेरा कुछ अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, मैं एक्सपोर्ट क्यों करूं? मुझे क्या करना है? क्योंकि मैं एक्सपोर्ट किए बिना ही मैं यहाँ मेरे पास इतना बिजनेस है कि मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाहर में एक्सपोर्ट क्यों करना है? तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहती है कि हमारा भी बिजनेस नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि एक्सपोर्ट करो, पर हम ये चाहते हैं कि हमें जो हमारे जो फ्यूल्स और टेक्नोलॉजी जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है उसके लिए हमें फ्री फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, और वो जो है वो आप ही हमें कमा के दे सकते हैं। और आप अगर आपको अभी आपकी जिम्मेदारी बनी है, सिर्फ आपका एक परिवार चला रहे, पर आप इसके साथ ही आपको बाकी लोगों को भी सोचना है, बाकी लोगों को और इम्प्लॉयमेंट देना है, आपके बिजनेस और बड़े करने हैं, और आपका वो जो माल जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाइए, और इंटरनेशनल मार्केट में आपको उसकी अच्छी कीमत मिलेगी और एक पहचान होगी, और एक देश की पहचान ही आप लोग ही कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फॉरेन एक्सचेंज लेके आए। आत्मनिर्भर भारत एवं ये जो हमारा मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का सपना आप लोगों के थ्रू ही पूरा हो सकता है, और कोई इसके लिए हमें हेल्प करने वाला नहीं है। हम तो आगे रहेंगे, पर आगे तो आपको बढ़ना है। आपके साथ हम खड़े हैं, आपको हैंड होल्डिंग देने की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, पर इतना हम भरोसा आपको दे सकते हैं कि यस हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आज तक की जो दिक्कतें हैं, वो अभी धीरे धीरे आपने देखा कि जो मेरा डिपार्टमेंट का एक रोल था कि पॉलिसी फॉर्मेशन करना, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, मगर अभी सरकार के ध्यान में आया कि भाई ये अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें अभी सब राज्यों की मदद लेनी पड़ेगी, सब काउंसिल्स की मदद लेनी पड़ेगी, जो हमारे फॉरेन एम्बेसीज है उसके लिए मदद करनी। तो इसके लिए 2017 से हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जो निर्यात बंधु वगैरह कहते हैं, उसके अंदर तो हम लोगों ने सबको एक साथ लाके एक प्लेटफॉर्म पे लाके, अगर आपको याद रहेगा तो गए अगस्त महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक भाषण दिया था, जिसके अंदर सब हमारे जितने भी काउंसिल्स है, जितने भी हमारे फॉरेन एम्बेसीज है और जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो सबको एक साथ लेके हमने एक योजना बनाई है। इसके अंदर हमने हर स्टेट को साथ में लिया है। हर स्टेट अपना एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बना रहा है, इंपोर्ट पॉलिसी बना रहा है। अभी स्टेट के हेल्प के बिना, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी हमने भी ठान लिया है, और हम आपके साथ आके हम चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट करें। आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो भी कुछ आपको जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कुछ चीज़ें हमें करनी है, वो गवर्नमेंट अभी पीछे रह के करेंगे। अभी आपको इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि एक साथ तो एक रात में सब चीज़ें बदलने वाली नहीं है। आज जो इतना साल से है, पर अभी पेस पकड़ा है ये चीज़ों ने, तो अभी हम भी जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो मुझे ये कहना है कि जो हमारे पास क्या स्कीम्स है, अभी जो मेरे पास है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एक लास्ट टाइम सितंबर में हम लोग कहीं गए थे, तभी वहाँ एक यूगोस्लाविया का एक राजदूत आए थे, उन्होंने बताया आपकी दो चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है। एक तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, या आपका प्रोडक्ट चीप होना चाहिए। अभी चीप का मतलब ये नहीं कि एकदम सस्ता घटिया वगैरह ऐसा। चीप का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके आप मार्केट में लेके आइए। और यूनिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा चीज़ करिए आप कि भला आपका एक स्क्रू रहे, मगर वो स्क्रू के बिना आपका कोई भी किसी का अगर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट अधूरा हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले से जो हमारी वो चिप्स की बड़ी कमती हो गई है, वो जो चिप्स है, माइक्रो चिप्स, उसके कारण हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बाद में फ्रिज वगैरह सब जगह वो जो चिप्स रखते, उसके कारण पूरा बिजनेस ठप हो गया था। तो ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाइए कि जो आपके प्रोडक्ट यूनिक हो और चीप हो, और वो मार्केट में आप लेके जाइए। आज इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबसे मेन आता है कि उसकी कॉस्टिंग। अभी जो कॉस्टिंग जो चीज़ है वो आपको ही डिसाइड करना है, आपको कैसा। तो जब भी आप कॉस्टिंग करते हैं तभी मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मेरे डिपार्टमेंट्स की कुछ स्कीम्स है, उस स्कीम्स का आप फायदा लेके आप आपके कॉस्टिंग में उसको करके, अगर उसकी कॉस्टिंग आप कम कर सकते हैं जो हमारे स्कीम का फायदा लेके, तो आप कर सकते हैं। तो वो जो इसके लिए हमने कहा कि अभी मेरे पास इंसेंटिव कोई है नहीं, 95 तक या 2007 तक इंसेंटिव थे। जैसा सबसे लास्ट इंसेंटिव था DEPP करके, उसके पहले थे एग्जिम्पटिव, उसके पहले था कैश। 91 का जिसने दौर देखा होगा, शायद जो भी 50-60s में जो भी ये यहाँ जिनका भी बर्थ है, उन्होंने देखा होगा 91 में हमारे देश में कितने बुरे हालात थे। पर 91 से 91 तक हमारा रोल भी था कंट्रोल करना।
कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही हमारा नाम था, पर 91 के बाद हमारा रोल भी चेंज हो गए, हम लोग फैसिलिटेशन में चले गए और अभी हम डायरेक्टली जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करके जाने जाते हैं। तो जो मेरे पास जो स्कीम्स है, हमने देखा कि आपके पास इंडस्ट्री, आपके पास खुद के यूनिट है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप काम कर रहे हैं, तो उसको जब अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो आप उसमें बदलाव क्या कर सकते हैं। आपके पास सपोज एक गारमेंट बनाने की यूनिट है, गारमेंट बना रहे हैं, तो आप गारमेंट जो बना रहे हैं, एक अपनी जो पारंपरिक जो पुरानी स्विंग मशीन है वो मशीन का सहारा लेके बना रहे हैं। तो अभी आज आपका जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग बोलते हैं EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स करके स्कीम है। वो जो स्कीम के अंतर्गत आपको जो लगने वाला कैपिटल्स है, जो आपको मॉडर्न करना है, वो कैपिटल गुड्स आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। वो कैपिटल गुड आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके, तो आप बोलोगे भाई ड्यूटी फ्री, देखो सरकार कोई कुछ फ्री कुछ देती नहीं है, फ्री के साथ कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। तो ऑब्लिगेशन तो है, पर ऑब्लिगेशन इतने कोई बड़े नहीं है। हम चाहते हैं अगर EPCG के अंदर अगर आप 100 रुपये का अगर इंपोर्ट कर ड्यूटी से कर रहे हो, तो अगले 6 साल में आपको 600 रुपये का एक्सपोर्ट करना है। बस ये इतना ही आपके लिए करना है, और वो बड़े आराम से हो सकता है। पर उसके कारण आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ का मशीनरी है वो अपग्रेड हो जाएगा, आप नया टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और वो नया टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बेहतर आप गुड्स बना के इंटरनेशनल मार्केट में आप जा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो EPCG जो स्कीम है उसका आप फायदा ले सकते हैं। उसके साथ बाद में दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो हमारे पे स्कीम है वो है एडवांस ऑथराइजेशन करके। एडवांस ऑथराइजेशन वो स्कीम है, अभी आपके पास मशीनरी तो आ गई, कैपिटल तो आ गया, पर आपको लगने वाला जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है, जैसा कि हम शर्ट बना रहे हैं, तो उसको लगने वाला रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए भी आपको कुछ, तो रॉ मटेरियल लाने के लिए भी हमारे पास एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम है। वो रॉ मटेरियल भी आप जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट का इसका वो आप ड्यूटी फ्री वापस ला सकते हैं। अगर उसके लिए भी सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन है, ड्यूटी फ्री होने के बावजूद भी, कि आप अगर 100 रुपये का आप अगर कोई मटेरियल ला रहे हो, अगर फैब्रिक आपने 100 रुपये का लाया, तो सरकार इतनी चाहते कि आपका एक्सपोर्ट 115 रुपये का हो। सिर्फ 15% वैल्यू एडिशन के साथ आप आपका इंसेंटिव, आपका जो ऑब्लिगेशन वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको फ्री के साथ ऑब्लिगेशन है, पर इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एडवांस ऑथराइजेशन एक स्कीम है, उसके साथ जो एक स्कीम है, और एक है DFI है, ड्यूटी फ्री इंटरनेशनल। तो DFI ऐसे है कि वो एक्सपोर्ट करने के बाद का आपका स्कीम है। बाकी एडवांस लाइसेंस आप पहले इंपोर्ट कर सकते हैं बेनिफिट लेके से, पर DFI जो है वो एक्सपोर्ट के बाद का स्कीम है। इसके अंदर आपको 20% वैल्यूएशन रख के, आपको जो भी हम लोगों ने विथ वेस्टेज जो चीज़ें हैं, जो अगर सपोज आप एक शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो हम आपको वेस्टेज के साथ 2.25 मीटर कपड़ा हम आपको इंपोर्ट करने को अलाउ करते हैं, जो ड्यूटी फ्री है। और DFI के अंदर वो आपको वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल है, तो वो चीज़ें DFI एडवांस ऑथराइजेशन। और तीसरा जो स्कीम है ROCLT और रोड टेप। जो भी रोड टेप है, रोड टेप हम आपको कुछ दे नहीं रहे, आपने जो कोई टैक्सेस दिए थे, आपके कुछ आपने जो अदर देन कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो हम आपको वापस नहीं करते, वही आपके जो रोड टैक्स के अंदर हम लोग आपकी चीज़ें हैं वो वापस कर रहे हैं। ROCLT में भी है कि गारमेंट के लिए इंसेंटिव है ये, और गारमेंट का इंसेंटिव नहीं, गारमेंट का स्कीम है। इसके अंदर हमने 2024 तक उसको अभी बढ़ाया है। आपका जो भी आप गारमेंट चैप्टर 62 एंड 63 के लिए ये चीज़ें हैं जो आप ROCLT के अंदर ले सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है, आप एक्सपोर्ट चालू करने के पहला हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, और वो है IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आज बहुत ही इजीली, पहला आपको जमाना याद रहेगा, आपको 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 महीना लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलने में। अभी आज आपको अक्रॉस द काउंटर, जैसा कि आप dgft.gov.in साइट पे चली जाइए, आपको 2 ही चीज़ें हमारी देनी है, आपका एक आधार कार्ड नंबर, दूसरा एक आपका पैन, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है, और एक 500 रुपये का आपको उसके अंदर आपका जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसे आप हमें फी दे दीजिए। आपको इमीडिएटली आपका पैन कार्ड इटसेल्फ इज आपका IEC नंबर होता है, तो आप वो IEC नंबर लेके आप फिर आपका एक्सपोर्ट्स वगैरह चालू कर सकते हैं। तो हम अभी इतना ही चाहेंगे कि आप लोगों में से ज़्यादा लोग आगे आके आप एक्सपोर्ट चालू कर दीजिए,
और देश के उन्नति के लिए आप पे आपका हाथ और लगाइए। और सालुंके साहब, आपने हमें बुलाया, इसके लिए हम आपके धन्यवाद। Thank you so much, sir, for encouraging all our entrepreneurs for export promotion. Now, may I call upon Shri Amit Jain, who is the business head SME Banking, Yes Bank, and he is going to guide us on finance and investment for advanced technology and diversification. Over to you, sir. I think most of the dignitaries have already covered. I don't think there's much to talk for me, but let me attempt. The topic that I have been given is about the advanced technology and the diversification which MSME can kind of invest into, and what are the financial options which are available. I represent Yes Bank, and at our bank we are kind of committed for the MSME. Just to give you a couple of numbers, in our book we are about 20% of the customers whom within our asset, the lending is to the MSME, right? And when I compare with my peers in private sector bank, probably it's not right for us to kind of compare with PSU banks because they have been in existence for 100 plus years. It averages between 10 to 15%, right? And we are already at kind of touching 20%. So this bank is kind of committed for MSME. We were a corporate bank about 5 to 7 years back, but in 5 years the journey has been to focus into the retail and MSME, right? So that's a kind of focus that we have towards MSME as a segment. With that, let me touch upon a couple of things which is happening in the industry in MSME, and I've been closely observing as to what's the shift which is happening. Thanks to pandemic, I know it's not really a thankful situation, but thanks to pandemic, a lot of us have in MSME space realized the importance of technology, whether it's digitization, adoption, or getting into new technology for either scale up or the cost save, and which are very, very important aspects for kind of development and the next level of scaling, whether it's a profitability that to be brought in or the volume that to be built up. A couple of examples that I was closely observing is in an industry where you make either a toy or a kind of stuff made out of plastic and rubber. Earlier you would make a die, it would take anything between 30 to 60 days for us to acquire a die and for MSME, and then finally you start your production. So the lead time between idea to actual start of a production would take anything between 60 to 90 days. With the 3D printers which are available, overnight we can kind of start with a production, right? That's one of the example. The CNC technologies which are available. So there are a lot of example of the physical technology that MSMEs are adopting. It's just not left to the large corporate. When it comes to the automations and the software, the adoption has been high. Earlier, cost of any software, if it is a 5 crore, MSME will not invest. If it is a couple of thousand, MSME would be wanting to invest into those software and have a scale in terms of the cost save, or in terms of the scale which you could achieve through the efficiency in terms of the labor, efficiency in the processes, and so on and so forth. So clearly there is a lot of merit in investing in new technology which is available in the market. Awareness has moved to a next level, and I think most of the MSME who are kind of reached 3 to 4 years of operating have started figuring out how, with the help of technology and diversification of the processes, they can move to the next level. A couple of examples, if I were to put it, the solar technology or the EV technology which a lot of us are adopting, right? Where the cost save that could come out of a solar panel that I would put up would be equivalent to the bill in the power that I will have, and the EMI that I would pay to any bank, forget about Yes Bank or any bank, would be equivalent. So the opportunities which are available are humongous in today's time. Coming back to what Yes Bank or most of our bankers kind of partner with all of you is not really looking back in terms of how we cannot fund. Right, sirs have talked about the CGTMSE scheme. Somebody spoke about the credit worthiness and credibility. Right, a lot of new schemes which has come up in recent time. I think the time is apt for MSME to kind of explore how they can borrow. The 2 or 3 things which plays very critical role for a banker when it looks at a MSME is the transparency
with which the data is available about the MSME, right? Whether it's a presence in GST, presence in banking, presence in other data which is available. We all are open for alternate data of assessing customer and lending, right? With government's focus, the in thing is MSME. So bankers would want to have fast, higher growth in retail and MSME compared to other segments. Most of the banks are ready. The transparency will lead us to the next level of growth with all of you guys partnering with the banks, right? So banks are not looking at lending and be a kind of a watch guard. It's only about the partnering with all of you guys. So that's from the banking fraternity. At Yes Bank, of course, we have a technology which is I wouldn't say the best in the industry, but when it compares to most of the banks, right, we have invested a lot in terms of customer facing technology, the back-end technology, and hence the experience that we offer to the customer is world class. Some of the stuff and the product structuring that we as a bank could make it available, which some of the other banks could not, right? For example, trading in ruble, right? One of the government of India's initiative whereby rather than paying in dollars, and which helps in terms of our foreign exchange as well, we are the first bank to kind of allow exchange in ruble, right? You could directly pay in rubles instead of paying in dollars. So some of those initiatives which Yes Bank has taken are kind of first in its kind. To end my note, some of the, I'll use this forum to make requests to some of the policy makers of our country. The way Gati Shakti has been used by Government of India to integrate all the department of government to kind of create efficiency and make it far faster for the services to be available to the end user, which is citizen of this country. Similar platform, while there is Hajar schemes and a lot of promotions which is happening, a similar scheme if available for MSME, it will yield far more efficiency for all of us, whether it's a banker, whether it's an MSME or the other stakeholders in terms of the next level of growth. So thank you very much for the time, and thank you very much for inviting us. Thank you, Jain Sahab. It's very interesting and very useful information you shared. Friends, some of our entrepreneurs, when they go for setting up business, rather I have insisted banks, even Rana Sahab, you can recollect our discussion. SME entrepreneurs should get at least 95% loan, those are buying for industrial premises. आज अगर आप देखोगे तो हाउसिंग लोन के लिए कितने बैंक, कितने इंस्टीट्यूशन बहुत आगे काम कर रहे हैं. यही अगर जरिया अगर हमारे SME सेक्टर के लिए किया जाए, इवन आई स्पोक टू प्रशांत कुमार जी ऑल्सो, सेम वे बैंक शुड कम आउट, बिकॉज आज की डेट में अगर हमारी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस हम परचेस करते हैं तो कितने SMEs ऐसा खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, रेंटल पे जाते हैं, लीज पर जाते हैं. क्यों ना हम एक ऐसा इस्तेमाल करें सिंह साहब बैंकों के माध्यम से कि 95% लोन उनको दिया जाए, 5% उनका मार्जिन. अगर आज इफ दे आर इन्वेस्टिंग 35%, 40% में कैपिटल अगर उसमें, तो मार्केटिंग के लिए कहाँ जाएंगे, प्रमोशन कैसा करेंगे. And ready-made industrial premises, if they are getting, it's easy for them to start production. तो बैंक का लोन भी देने के लिए, इंटरेस्ट भी पे करने के लिए इजी हो जाता है. तो बेस्ट that is one thing. And second thing, I have suggested long back that if you are allocating say like a 1 crore or 10 crore or 50 crore loan, एक 20 to 25% लोन आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से कैपिटल गुड्स एडवांस टेक्नोलॉजी लेने के लिए उनको दिया जाना चाहिए. तो बार बार उन्हें फिर सैंक्शन के लिए जाने की जरूरत नहीं है. उस माध्यम से इफ दे वांट टू बाय मशीन्स इक्विपमेंट, बिकॉज once they want to go ahead with this by buying equipments or machines, they will get some time to identify good manufacturer, good suppliers. Even they can import the machines from the different countries, which is useful for them. This is one. Third thing, most importantly, capital markets. I don't know how many SMEs are listed in a capital market. Anyone is here who is listed in a SME platform? SME प्लेटफॉर्म भी देखिए 2008 में जब CB भावे चेयरमैन बने थे तो उनके पीछे लगकर मैंने SME प्लेटफॉर्म बना के ले लिया. बट इवन दो 1000 कंपनीज आल्सो नॉट कंप्लीटेड सेटिंग अप देयर बिजनेस ऑन द कैपिटल मार्केट. सो दिस इज आल्सो वन बिग अपॉर्चुनिटी. एंड हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर्स गेटिंग रिसीवेबल थ्रू ट्रेड्स के बारे में किसी को पता है?
Are you getting proper receivable from your customers, suppliers? You are getting. So even trades, when Mr. Raghuram Rajan was the governor, मैंने कहा एक तो हमारा 90 डेज का 180 डेज कीजिए एनपीए का, नहीं तो फिर ऐसा कुछ जरिया लाइए. तो पद्मनाभन जी जब थे ईडी आपके चेयरमैन बने थे, उनके पीछे लग के हमने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लाया. तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो वेरी गुड. यू शुड इंसिस्ट योर बायर to list to discount your invoices through that, because of the awareness amongst our SMEs, they are not going for. थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑर्डर फिक्स किया, फिर इंसिस्ट नहीं करना है. बहुत सारे SMEs का ऐसा है कि आज अगर समझो मैं XYZ कंपनी को सप्लाई करता हूँ और वो 90 डेज तक पेमेंट नहीं देता है, तो हम रिलेशन ख़राब नहीं करते. हमारा बैंक के साथ में भले एनपीए हो जाता है, बट कस्टमर के साथ, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर इज द किंग. तो कस्टमर को हमें संभालने के हिसाब से 90 डेज या 120 डेज भी होता है, कभी कभी हमको संभालना पड़ता है. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स नाउ, बट नेवरदलेस वी शुड फोकस मोर ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, एम्पावरमेंट, एंड जो मैंने 5 M बताए थे उसमें से 3 मेन M है. एक मनी, मैन पावर एंड मार्केट. सो मार्केट के लिए हम बैठे, मनी के लिए बैंक बैठी है, और मैन पावर के लिए बहुत सारे HR कंसल्टिंग फर्म है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है. मुझे लगता है दिस इज द राइट थिंग. एंड एडवाइजरी सर्विसेज, आई सजेस्ट टेक अ प्रॉपर एडवाइजरी सर्विसेज फ्रॉम द कंसल्टेंट, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, विच विल बी यूजफुल फॉर यू. क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हमारा 42 रोल अदा करता है. एक बिजनेसमैन मोर देन 42 रोल्स दे play in their business. So to reduce the burden, we should focus on adapting the new technology, advanced technology, new ideas, new concept. So friends, now I'll open for a question answer. आपके कुछ questions हो, कुछ suggestions हो, तो please, yes, go ahead. The current question problem facing by MSME is the rupee settlement from Russia. Still the MSME is not very much clear which bank to work with, which bank from Russia will work with our bank. So on this issue, if one circular or one informative leaflet is circulated in the MSME, that will help us a lot, number one. Number two, that Salunke sir said that there are a lot of experts and consultants available for MSME to prepare the report and then to give the banks. What I suggest, in last summit also I suggested and you also endorsed, I would propose one nodal officer in a branch where you call MSME branch. He should be available only for MSME to help them. No other burden, nothing like when you say RMME is overburdened with all data collection, this and that. He is not free to listen the problem of the MSME. So my suggestion is that nodal officer is appointed. He will go to MSME unit. Okay, let's over to Mr. Rana about Russia matter. Yeah, please. रशिया में स्टेट बैंक एंड कैनरा बैंक वी हैड अ जॉइंट वेंचर बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ LLC बोलते हैं उसको मॉस्को में. अभी रिसेंट न्यूज़ था दैट कैनरा बैंक इज दे हैव सोल्ड देयर शेयर्स टू स्टेट बैंक. नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड ब्रांच इन रशिया, एंड ऑन द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट a couple of banks, I think 3-4 banks, they have opened their account, Vostro account with us. And I'm not sure वो दूसरा वर्टिकल है, बट आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ. आवर स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लिमिटेड and 2-3 other branches, bank has been authorized, they have opened the rupee account, the Vostro account of those Russian banks जिनकी प्रेजेंस यहाँ पर है. तो वो किस लेवल पे है वो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट की गाइडेंस पे वो काम स्टार्ट हो गया है. There are some banks under sanction, some are not sanctioned, then we are at confusion with MSME. नहीं, वो रशिया के ट्रेड को लेकर के है, लेकिन अभी आप देखते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे कि इंडिया कितना स्ट्रांग निकल करके आया है इस पे. इनफैक्ट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स वेरेवर ही गोस, उन्होंने पीछे यूरोप का भी एक मैं क्लिप देख रहा था कि किसी ने यूरोप में किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि मतलब क्या है कि हम लोग इतना ऑयल जो परचेज कर रहे हैं, क्रूड परचेज कर रहे हैं रशिया से. सो दी जर्नलिस्ट आज दी आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कि आप तो इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट कर रहे हैं इसको, रशिया को. तो उन्होंने ये बोला था कि आप देखिए कि जितनी एनर्जी की डिपेंडेंस यूरोप की रशिया पे, आप लोग भी तो ऐसा तो नहीं कि आपने बंद कर दिया है. तो जो मेरी नीड्स हैं, और आई थिंक इस क्राइसिस में, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में
इंडिया हैज़ कम आउट विथ मोर स्ट्रॉन्गर आई थिंक पर्सपेक्टिव लेकर के आया है, और अभी नाउ वर्ल्ड हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग आवर पावर। तो उसमें वो आई कैन अंडरस्टैंड आपका जो रशिया में जो लोग ट्रेड है, बट आई एम श्योर मैं आपको इसमें क्लैरिटी दे सकता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। हमारे किन किन बैंक ब्रांचेस के लिए ऑथराइज हुए स्टेट बैंक की, और भी 2-3 बैंक है इसके लिए, आई थिंक जो इसके लिए गवर्नमेंट भी बड़ा स्ट्रांगली और बड़े उसमें काम कर रही है, क्योंकि जो ट्रेड है इस समय आई थिंक अभी आया था कि नाउ इंडिया इज आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ क्रूड फ्रॉम रशिया, इसी वजह से हो गया है। तो इसमें आपको क्लैरिटी में दे दूंगा अलग से जो आपका रशिया वाला क्वेश्चन है। बट यस डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, आरबीआई ने ऑथराइज किया, कुछ बैंक्स में काम कर रहे हैं। नोडल ऑफिसर इन द बैंक, पढ़े नोडल ऑफिसर फॉर ओनली फॉर एमएसएमई। हाँ वो ठीक है। मैं आपके एसएमई इंटेंसिव हमारे यहाँ जैसे मुंबई मेट्रो में वी हैव 19 एसएमई इंटेंसिव ब्रांचेस, बट आई नोट योर कंसर्न कि आरएमएसएमई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज बाउ डाउन द वर्क आपको, जबकि उनके पास सपोर्ट ऑफिसर भी है। पर हम एक ऐसा सर्कुलर निकालते हैं कि अगर कोई एसएमई कस्टमर्स हूसोएवर विजिट्स और एसएमई इंटेंसिव ब्रांचेस, द ब्रांच मैनेजर शुड इंश्योर दैट ऑल देयर क्वेरीज आर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डेड, प्रॉपर्ली रिप्लाइड। इन ब्रांचेस में इनफैक्ट क्या है, जो एसएमई ब्रांचेस में हमारे इन एडिशन टू द ब्रांच हेड वी हैव रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर। इन जगह हम लोगों ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव और चीज़ों के ऑपरेशंस पर्पस के लिए एक डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी दिया है। तो हम देखते हैं कि आइदर डीपीबीएम ब्रांच मैनेजर और ब्रांच हेड दे शुड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द एसएमई कस्टमर्स। और एक मेरा आई थिंक इसमें ये भी आपको रिस्पॉन्स रहेगा, जनरली हमारी जो एसएमई इंटेंसिव ब्रांचेज हैं वेर एवर वी हैव पोस्टेड आरएमएसएमई, वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे नॉन एसएमई कस्टमर्स ज़्यादा नहीं आता है। बट यस आई कैन अंडरस्टैंड, फिर भी हम एक सर्कुलर अपने हेड ऑफिस से निकाल सकते हैं कि आइदर द ब्रांच हेड और द डिप्टी ब्रांच विल डिजिग्नेट the single point of contact for the SME customers. The other problem is that branch manager or MME every 6 months, 1 year they are changing. So by the time they know us fully, other manager come. मैंने जनाब जून में have reported in this circular and made it a point, even if people get promoted, promotion पे थोड़ा मूवमेंट जरूर होता है, लेकिन हमने एक सर्कुलर यहाँ HR के लिए निकाला है कि कोई भी ऑफिसर किसी भी पोजीशन मिनिमम 2 years को जरूर रखना है। आई थिंक अभी आपको ये पक्का मिलेगा, आई विल मेक श्योर। और आरएमएसएमई के केस में जो है वो मैनेजर, चीफ मैनेजर रहते हैं, तो हमारे पास थोड़ी सी फ्रीडम है कि इवन ऑन प्रमोशन वी कैन रिटर्न देम इन द सेम पोजीशन। अब आपको ये मिलेगा पक्का कि जो भी जिस पोजीशन में एटलीस्ट दे स्पेंड 2 years इन दैट पोजीशन, दैट आई कैन अश्योर यू। सर जस्ट अ मिनट। फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों ने जो कोशिश की है वो ये है कि देखिए स्टाफ की स्कैर्सिटी है, कॉस्ट भी है, तो बिजनेस जो होना चाहिए उसकी वायबिलिटी भी होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को देखते हुए कि वी आर ट्राइंग टू अपॉइंट पेड क्रेडिट काउंसलर्स who will be of that area. They can be chartered account, they can be engineers, all those things. By 1st April 2023 we are going to launch that. वो लोग परमानेंट उसी एरिया के होंगे, अप्रूवल हमारा होगा, they will be paid a fee by the bank and they will provide you all type of services for credit counseling to MSME as well as other loans also. Jain sir, is there any mechanism that you are as a private bank, are you dealing through any your partner from Dubai, particularly for the Iran and Russia? So we do have a tie-up, right? I would be able to share the specific because I have not prepared myself for. Slightly to touch upon the ruble matter, right? While my colleagues and their banks have a presence, I think our bank could manage these transactions because we did not have a sanction. We don't have a foreign office in US, so we did not have a sanction, and we got authorization from RBI and the Government of India to directly manage the remittances, inward and outward, both within the ruble framework itself. So on the Russia topic, I think it worked. We have similar tie for Iran and Dubai as well. In case anybody has an interest, my credentials are available and we would be happy to handle that. So Iran also we can utilize. Yes. Good. Rather, the Iran matter will be going to resolve very shortly. Most of our PSB bank also facing a lot of problem. SBI, I think SBI, UCO bank is having, yes. But after this Russia and India cooperation and G20 presidency with the government of India, I'm sure that US will not take more serious for bringing sanction on India. They will not. So in few months or we can say few months, the Iran will be also open for a direct dealing for Indian companies. Yes, please. You want to say something?
Sir, it will be pertinent in the interest of all the entrepreneurs to know about the Web3 development in the banking from B2C point of view, because blockchain has been happening in more from bank to bank. But how are you taking this forward to the entrepreneurs in the due course? So what are the plans for the blockchain to the entrepreneurs from the banking arena? Yes. Who would like to take up this question? I think when it comes to blockchain technology, we have a separate, as you know, you have heard about the YONO. I, touched upon the point of YONO business. Yes, our separate vertical, which is, dedicated to YONO business, we are working on this. And so far, yes, I can't say, the timeline, but yes, definitely we are working on the blockchain technology through this YONO business. And very soon, I think you will see this. We are trying to route as much of, especially the international business through the YONO portal as possible, and also the domestic business. And as the focus, inside the bank is on the digital technology, the digital loans. So we'll see probably, sometimes to come, maybe 5 to 6 months of time, that the blockchain technology inside the bank is in place, and more of the SME loans are routed through this, digital channels. What I'm trying to understand, we are developing, smart wearable glasses, and it's we are forming a consortium. So there's a lot of collaboration happening. So there's an inclusion of all these players that will be required. And banking, when we inquire about banking, they are not open to APIs also, and nor they are aware about this trend. Whereas the other private players, they may be in a position to join. What we can do is, you can share details with us, and we'll connect you to the IT team, those who look into these areas. Thank you. Definitely we can connect to them. Thank you. Yes. Yes, anyone? What you are telling about the blockchain, basically it is for the members who are the members of that community. Blockchain is open to them. We as a banker, if we are providing any services, all my customers can be the beneficiary, or even the prospective customers can be the beneficiary. So blockchain cannot be an option for that. We also at Bank of India are going to launch our universal app. Through universal app, we will be providing some sort of ecosystems through which we can communicate with our prospective customers or the existing customers for easing out their problems. That is an offering. Okay. It will be universal platform for, we will come with the retail, agri as well as MSME. Dedicated suite of services will be there. There we can have some sort of this information available. Okay. Yeah. Parameters are met, and then the funding can be reissued, or the trade discounting can happen on the WIP or bill invoicing. So are those kind of things in place? Because the whole challenge today for SME is processing the entire funding or the processing. So in the smart contract, you will already have the validated people, validated terms, and it just becomes immediately pushed through, and recoveries and everything happens in a predetermined fashion. Yeah. So one thing is that TRADES is already there. That is sort of the same thing. Any customer can upload his invoices. It will go to the n number of bankers. Whosoever offers the better rate, they will get discounted from there. SIDBI, in consultation with Government of India, is going on GST Sahay. And already I think PSB 59 has developed something on this, I think for government purchases, that site, just forgot that site. GEM portal, GEM plus GEM Sahay they have also developed. Through that also, but that has not taken much of traction there. But GST Sahay, with the help of Government of India as well as SIDBI, they are going to develop a robust model where deduplication and all those things will also be there. Now, as of now, what is the problem in this supply chain is a person, because there is no method of identification of those GST invoices discounted or not from the GST portal. So it is, you can take book data against that also. You can go to GST Sahay also. You can go to TRADES also.
buyer as well as supplier both can take a credit on that also. So all these things are there. So to avoid all those things, at least I think the GST high will be a better option, and it is likely to be rolled out in 2 or 3 months. Some pilots are also going there. So that is going to be the case there. Thank you. Okay. You know, we have received one question yesterday for particularly private bank and the PSB bank. If someone is having account in XYZ PSB bank, say like a 10 crore turnover, 10 crore they are enjoying, but they want to change the bank. While takeover, there are a lot of issues come up. So how we can, resolve or we can guide SME sector, particularly the entrepreneurs, those are shifting one bank to other bank. जैसे अभी आज की डेट में देखिए मोबाइल नंबर इजीली कितने चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्यों ना कुछ ऐसा जरिया क्या किया जाए कि जिससे माध्यम से हमारे एसएमई सेक्टर को, इफ दे आर नॉट ग्रोइंग इन दैट बैंक और दे आर नॉट गेटिंग सर्विसेज, दे वांट टू शिफ्ट अदर बैंक, एसबीआई, आपकी स्ट्रेटजी? No bank allow his or her units to be taken by other bank. Inside the bank, we try to retain our customers, but yes, probably there are compelling circumstances. Probably when the customer is desperate to change the bank, maybe sometimes they will have some issues probably at the branch level. Yes, that can happen. But I think उसमें कुछ इस तरह का बाधा या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई वी बिंग स्टेट बैंक तो हम किसी को रोक पाएंगे. आप ये देखिएगा आज की डेट में होम लोन में इतना क्लियर हो रहा है, इतना जाने की वजह नहीं, आने की भी. हाँ नहीं, दोनों तरफ बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट होम लोन में तो क्या हो रहा है, विच वी आर एक्चुअली फेसिंग दीज डेज, कस्टमर विल फाइंड आउट द बैलेंस, सपोज 10 lakh प्लस है, एंड स्ट्रेट अवे दे विल रेमिट 10 lakh of funds to us, एंड द नेक्स्ट डे विल कम टू द ब्रांच कि अभी मेरा आउटस्टैंडिंग इज इन थाउजेंड्स और रिपे कर दिया, मेरी टाइटल दे दीजिए. तो इस तरह बैंक के पास कोई ऐसा हथियार नहीं, कोई टूल नहीं, हम किसी कस्टमर को रोक पाए कि इफ ही और शी वांट्स टू शिफ्ट द बैंकिंग. अब रिवर्स है कि सपोज एक कस्टमर जो है दी एसएमई यूनिट इज बैंकिंग विद बैंक एक्स एंड वी वांट टू टेक ओवर दैट कस्टमर का कॉम्पिटिटिवनेस है, उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑफकोर्स जो बैंक जिससे वो प्रेजेंट बैंकर हैं वो बैंक पूरी कोशिश करेंगी, अच्छे कस्टमर को कोई नहीं छोड़ना चाहता है. पर जैसे बैंक के अंदर हमारे क्लियर जो है टेक ओवर नॉर्म्स बने हुए हैं, वी मेक श्योर दैट इनफैक्ट जो जिस कमेटी में भी जिसकी पावर में जाएगा, पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर ये कस्टमर दूसरे बैंक का है तो आपका टेक ओवर नॉर्म्स का कंप्लायंस क्या है. और वो बड़े स्ट्रिक्टली जो है बेस्ड ऑन दी आरबीआई गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन इंटरनल रिस्क फ्रेमवर्क हम लोगों ने टेक ओवर नॉर्म्स बनाए. तो अगर टेक ओवर नॉर्म्स को वो कंप्लाई करता है तभी हम उसको टेक ओवर करेंगे. तो वी आर फेयर ऑन दैट कि इस तरह की अननेसेसरी पोचिंग या कस्टमर को अभी हम कुछ जो है दिखा करके कि हमारा रेट बहुत बढ़िया है, कल को कुछ और चीज़ें निकाल, वी आर दैट वे आई थिंक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, एंड वट एवर वी ऑफर टू द कस्टमर दैट एक्चुअली द कस्टमर गेट्स, एंड इवन द पीपल, द ब्रांच हु इज bringing a customer to the bank, we make sure that the takeover norms of the bank are first complied, then only we'll see you. So उसमें हम लोग बड़े fair हैं. सिंह साहब, आपकी बैंक का क्या जरिया है? The same thing, we also have the takeover norms, and those norms have to be applicable on the takeover accounts. Even the accounts which have been closed for the last 3 months and going in for takeover, the takeover norms apply for that. Another issue that a lot of information is available in public domain itself. That is your credit rating, your GST returns, all those things. They give us a fair idea, and particularly CMR rating is also there. With those ratings, we can come to a conclusion that what the account has the merit. This thing is also available to the existing banker. So taken together, there might be some issues because people are coming or shifting from one bank to another bank simply because that the existing banker doesn't want to serve them. Until unless there are some internal issues, we think as per the ratings which are available, and they are available in the public domain, there is not much of issue in takeover of the accounts. That I can assure you. If it is a good account, it will be given due credit. Yes bank तो सबको yes बोलती है, कैसा? What is strategy? So I think this is a sensitive topic within the banking fraternity, right? None of the bankers would want to let a good customer go away, right? Whether it requires an enhancement or better commercials in terms of rate of interest, fees, and so on and so forth, right? And every bank does that attempt, whether it's a PSB bank or whether it's a private sector bank, right?
But I think eventually the better service and the better commercial for MSME wins, right? In terms of if you are getting a commercial benefit, MSME is very, very sensitive about the money that it spends to get that finance, right? Which is rate of interest and the fee. However, parallelly at that point in time, the services matters. If you have had some requirement at that point in time, your limits are blocked, right? Or you go to the branch and somebody could not really support you with certain transaction which was very, very immediate in nature, right? Or you require that temporary TOD when you really had a peak season, or maybe an ad hoc that is required during your seasons, right? So these are the kind of services which determines whether a client would want to stay with you or kind of shop around in market. But I would want to say the banking relationship is like a marriage. Because you had little tiff, you just do not take divorce, right? You have to evaluate rightly in terms of what bank suits you, and then MSME must take a call. So that's our take. Good. Mr. Jain has given very good direction for all the banks. Divorce नहीं चाहिए तो हमें भी थोड़ा संभाल लीजिए. SME sector को भी संभालना बहुत जरूरी है. Thank you very much, friends. I'm grateful to the SBI, Bank of India, S Bank. Go to the platform which is providing support to the SME sector. Special thanks to Ministry of Commerce, DGFT, and Bhumi World, and SME Credit Check Private Limited also. And special thanks to all of you, because tomorrow is a public holiday, फिर Friday है, फिर Saturday, Sunday, तो ये week पूरा tied up है, तो इसीलिए हमने half day का ही program रखा है, because today you will complete some business activity of your own, so that's why we came. So now we are not going to take a break, so we'll continue our next session. And thankful to Rana Sahab, Singh Sahab, Jain Sahab, and Mr. Kanse for sharing your thoughts. I'm sure that this will be useful, because bankers के पास पैसा है, वो आपको कैसा लेना है, वो that is your point. Properly, advantageously, because see, government is creating platform, government is providing hand holding. अगर आप SME सेक्टर काम नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं निकालोगे, कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, नेशनल इकोनॉमी का बिल्डअप नहीं करोगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना कोई नहीं पूरा कर सकता, हम ही कर सकते हैं. So thanks to all of you for putting efforts for the Indian economy, and thanks for attending today's program. Thank you very much.